हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आई एम मुख्तार अहमद शेख फ्रॉम उर्मिला देवी पीजी कॉलेज। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे विल डिस्कस अबाउट द PSC second year and third year syllabus in organic chemistry. Today we'll discuss the coordination chemistry. Okay. So already you have read about the coordination chemistry in the previous classes, and today we'll discuss about the classification of ligands. In these cases already you have read about the monodental ligands. So first at all we can explain the definition of ligand. Ligands are those which are also containing at least one lone pair of electron, and on the basis of lone pair of electron we can classify it. There are following types of ligands. First at all we explain the first point, monodental ligands. Monodental ligands. What is the monodental ligand? In this means that mono means one, dentate means bites by teeth. In these cases we explain a ligand which shares electron pair of a single donor atom with a metal atom or ion is called a monodental ligand. Means that any coordination compound or complexes when a ligand coordinated to the central metal atom by the one lone pair of electron, then will be monodental ligands. Because you can see here a ligand which shares electron pair of a single donor atom. So a single donor atom means that one pair electron coordinated to the central metal atom. In these cases a metal atom or ion when coordinated by a single donor atom is called a monodental ligand. Means the word monodental comes from the Greek monos. Means Greek letters monos means one and Latin dentis. Monos means one and dentins means tooth. Literally means one tooth. Therefore it means that a monodental ligand binds a metal cation or atom with one lone pair of electron. So that we explain the ligands, we can classify the ligands on the basis of donor atom, donor electron, lone pair of electron. When any ligands coordinated to the any central metal atoms by the lone pair of electron, if the one lone pair of electron coordinated to the central metal atom, that is the monodental ligand. Mono is taken from the Greek letter monos, which means that one, and Latin words dentate. Dentis means bite by tooth. So that a monodental ligand binds a metal cation or atom with one lone pair of electron. So when any ligands bind or coordinate to a central metal atom by the one lone pair of electron, then we consider this type of ligand is known as monodental ligand. So that monodental ligands always ligands the electron rich molecule, always the ligand is the nucleophile, always ligand is the negative, always metal is cation,
and ketal also receiving the one lone pair of electron, so means that metal always electron deficient. So if the metal is coordinated by the one lone pair of electron, then will be monodentate ligand. If the metal is coordinated, metal cation or atom coordinated with the two lone pair of electron, then will be bidentate. If the three lone pair of electron, then will be tridentate. If the coordinated by the four lone pair of electron, then will be tetradentate ligand. So that we can explain the type of ligands on the basis of lone pair of electron. So thus monodentate ligands, bidentate ligands. So generally bidentate and tridentate, tetradentate and pentadentate ligands we consider the polydentate ligands. So that here there are various examples, there are very examples we can give to you, and a ligand which shares a, so we can generalize that a ligand which can share electron pair of a single donor atom, then will be known as monodentate ligands. Monodentate ligands is the taking from the Greek letter monos and the Latin word dentis, means that monos means one and dentis means tooth, by the bites by the one atom, bites by the one atom, one lone pair of electron to the central metal atom is known as monodentate ligands. Monodentate ligands we can explain NH3. NH3 is a monodentate ligand. For example, NH3 also having monodentate ligand because nitrogen also containing the one lone pair of electron. Okay. So this type of ligand is known as neutral ligand. This type of ligand is known as neutral ligand. So NH3 here monodentate ligand. For example, CN1 minus cyanide. So cyanide, that is the negative ligand. Here nitrogen is one lone pair of electron. So that we can find key here one lone pair of electron. So that this type of ligand is known as monodentate ligand. And here the negative ligand, but the nitrogen also containing one lone pair of electron is known as monodentate ligand. So in these cases we can find if the any atom also containing the one lone pair of electron and coordinated to the one central and coordinate to the central metal atom by the one lone pair of electron, that is known as monodentate ligand. Just like for example CH3, CH3 and NH2 methylamine. So here nitrogen is the one lone pair of electron. So thus on the basis of number of ligands, on the basis of lone pair of electron, we known as monodentate ligands. Monodentate ligands will be anion and neutral ligands. There are some anion or negative ligands also following here. CH3CO1 minus acetate, CO3 2 minus carbonate, means that any ligands to the nomenclature, the last word E to the remove and add the O here. CH3CO1 minus, that is known as acetate anion, but here that is acetate, we call acetate. CO3 2 minus here carbonate, and here SO3 2 minus sulfite, SO4 2 minus sulfate, S2 minus sulfide, NH2 1 minus amide, F1 minus fluoro, halogen group, Cl1 minus chloro, Br1 minus bromo, I1 minus ido, NH minus 2 imido, N minus 3 nitrido, OH1 minus hydroxo, O2 minus oxo. That is a very important ligand.
of the monodental ligands, O2 minus oxo, O2 minus peroxo, O2 1 minus superoxo, H1 minus hydrido, N3 1 minus azido, S2O3 2 minus thiosulfito, CN1 minus cyano, NO3 1 minus nitrato, है ना, and single bond NO2 1 minus nitrito. If the terminal atom is N, donor the lone pair of electron to the central metal atom, then will be N coordinator. So single bond NO2 1 minus nitrito N, because here we can find that N is the donor atom. In this case, single bond ONO nitrito O means that O donor atom, and single bond SCN1 minus thiocyanito S, single bond CS1 minus isothiocyanito O, यहाँ पे थायो लगाना चाहिए, थायो, ठीक है. सिंगल बॉन्ड CnO1 O माइनस साइनेटो, सिंगल बॉन्ड ClO3 1 माइनस क्लोरेटो. So these are the negative ligands. These are the negative ligands. Negative ligands means this type of ligands also always negative, as well as containing the lone pair of electrons, and several lone pair of electrons also having the ligands. But how many number of lone pair of electrons donor to the central metal atom, coordinated to the central metal atom, then we consider this type of ligand. And what is the type of ligand? Means that if the one lone pair of electron, already you know that here oxygen also having the two lone pair of electron, but if the one lone pair of electron coordinates to the central metal atom, then we will consider the monodental ligands. So monodental ligands, the ligands also having the main several lone pair of electrons, but how many number of electron donor to the central metal atom? How many number of electron donor to the central metal atom? Then we consider then on the basis of donor electron by the one atom, one ligand to the central metal cation or atom, then we consider the monodental ligands or bidental ligands. So in these cases, this type of ligands is the negative ligand, as we have a monodental ligand. And second is some example of neutral ligands, which are named as such: C6H5 का होल थ्राइस 3 ट्राइफेनिलफॉस्फीन, CTH4 इथाइलिन, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजन, CH3 का होल ट्वाइस NH डाइमेथिल एमीन हियर, एंड C6H5 का होल थ्राइस AS ट्राइफेनिल आर्सिन, CH3 NC methyl isocyanide, C2H5O, C2H5 diethyl, C2H5 means ethyl, and C2H5 means diethyl, O means ether, so that diethyl ether, NH2 amine, NH2OH hydroxylamine, and N2 dinitrogen. And neutral ligands which are given a special name. There are following example which are the special ligands and a special name, means that for example CO means carbonyl, H2O aqua, NH3 amine, CS thiocarbonyl, NS thionitrosyl. If any ligands also containing more than one lone pair of electron, then will be under the classification of the polydental ligands. Polydental ligands also there are following types: bidental ligands, and tridental ligands, and tetradental ligands, pentadental ligands, and hexadental ligands. It means that more than one lone pair of electron also containing any ligands, this is known as polydental ligands. Polydental ligands are various types, as well as bidentate, tridentate, tetradentate, and polydental ligands. So there are following types here. First at all we consider here bidental ligands.
Bidental ligands are those which are donor the electron to lone pair of electron. Means that ligands also having at least two donor lone pair of electrons. It means any ligand or anions or neutral ligands to the coordinate of to the central metal atom are cation by the two donor electron, two donor atom, two lone pair of electrons. In these cases we can find these ligands have two donor atom which can attach to a single metal atom, cation or atom. Again, these ligands have two donor atom which can attach to a single metal atom, cation or atom. In these cases, two donor atom should be compulsory and two donor atom. Donor atom means lone pair of electrons also having this type of atoms. So when two donor atom, two lone pair of electron coordinated to the central metal cation or atom, that is known as bidental ligands. Bi means two, bidental ligands, and this type of ligands is known as polydental ligands. Bidental ligands is a super example of polydental ligands. More than one lone pair of electron, any atom also having polydental classified. Means that bidental ligands, these ligands have two donor atom which can attach to a single metal atom, cation or atom. For example, here means NH2 single bond CH2 single bond CH2 single bond NH2. You can see here CH2 means ethylene, because ethylene also having the one pi bond. When the one pi bond it breaks, then will formation the 2 sigma bond. Here the one pi bond is breaks and separately both sides 2 sigma bond generate, and a process by the amine groups. So here amine groups, how many amine groups here? There are 2 amine groups, NH2, so that diamine, and in this case that is the ethylene. So that completely name it's ethylene diamine, which is the short form is EN. EN means ethylene diamine. EN is the letter of to writing the ligand short form. EN means ethylene diamine. So here you can see found NH3, nitrogen also having one lone pair of electron, NH2 also having one lone pair of electron. So that here two donor atom, amine, two donor atoms. So that this type of ligand is known as bidental ligand. And here the number of lone pair of electron is the 2, because here 2, one lone pair, here one lone pair of electron, but these ligands have two donor atom. Here the two donor atom means two lone pair of electron to the attach a single metal atom or cation is known as bidental ligand. Here COO1 minus single bond COO1 minus, that means oxalato, that is form of oxo. Here the oxygen is two donor atom, two lone pair of electron, so that this type of ligand is known as bidental ligand. Bidental ligands means any atom also having the two donor atom as well as also having the two donor electron. NH2 CH2 CO1 minus here glycinato. Here the two donor atom are different. Nitrogen is the one donor atom, oxygen is the one donor atom. Both donor atom are differ, but here compulsory is the two donor atom. So that this type of ligand is known as bidental ligand, and this is name is glycinato, that is the GLY. So on the basis of number of lone pair of electron, we can find there are following types of polydental ligands. We can explain the bidental ligands. Bidental ligands are those ligands which have two donor atoms which can attach to a single metal atom, cation or atom. For example, oxalato OX, glycinato GLY, and EN ethylene diamine EN. And next is the tridental ligand. Tridental ligand, tri means 3, dentate means bites by tooth. So here if the any atom also having the 3 donor atom which can attach to a single metal cation or atom,
that C type is known as tridental ligand. Here you can see NH2, single bond CH2, single bond CH2, single bond NH, single bond CH2, single bond CH2, single bond NH2. So you can see, find here NH is the amine group. There are 3 amine groups, NH2, NH, NH2. So there are 3 amine group also having, and CH2 ethylene, CH2 ethylene. So there are 2 ethylene here. So in these cases 2 ethylene, so 2 word is used for the in chemistry language di. So diethylene means and NH2, NH, NH2, 3 amine. So that diethylene triamine, diethylene triamine, diene means diethylene triamine. We consider if the in means 1 ethylene, 2 amine. If diethylene, then 3 amine. Means that one is more to the comparison of amine group, so that we can find diethylene triamine. If the ethylene is di, then will be amine is tri. If the ethylene is 1, then will be di, means 2 number of amine. So that we can find here ethylene, diethylene triamine. Here you can find the 3 lone pair of electron, 1 lone pair, 2 lone pair, and 3. So 1, 2, and 3. So that this type of diethylene triamine is known as tridental ligand. If the any ligands also containing the 3 lone pair of electron and coordinated to the central metal atom, means when the 3 donor atom also containing the central metal atom approaches, then will be tridental ligands. 3 donor atom will be same or differ. Here in these cases, next point, 3 point is tetradental ligands. Tetra means 4. Dental ligands means those ligands in which including there are 4 donor atom to coordinated a central metal atom, one single central metal atom or cation. Means that when 4 donor atom are same or differ will be coordinated to the central metal atom, cation or metal atom, this is known as tetradental ligand. It means the lone pair of electron is 4. Here you can see NH2, single bond CH2, single bond CH2, single bond NH, single bond CH2, single bond CH2, single bond NH, single bond CH2, single bond CH2, single bond NH2. So that we can find here amine, 1 amine, 2, 3, and 4. Here in these cases 4 amine, but ethylene is 1, 2, 3. So that we can find triethylene tetraamine, triethylene tetraamine. In this case we can find tri means triethylene and tetraamine. So that here the 4 number of lone pair of electrons, so that we can find this type of ligand is known as tetradental ligand. Any ligand we can include it to the classification the number of lone pair of electrons. If the any ligands also having the 4 lone pair of electrons, then we can find the tetradental ligand. If the any atom or ligands also containing the 2 lone pair of electrons, then will be bidentate. If the lone pair of electron is 3, then will be tridental ligand. So that triene means triethylene tetraamine. This type of ligand is known as tetradental ligand. Pentadental ligands, here you can find 5 amine, 1, 2, 3, 4, and 5 amine. 5 amine means that is 5 amine. So that we can find pentaamine, that is 1, 2, 3, and 4. Tetraethylene here. So that tetraene means PN. तो यहाँ पे होगा आपका इन दिस केसेस टेट्राइथाइलिन पेंटाएमीन, टेट्राइथाइलिन पेंटाएमीन. Very important here,
hexadental ligands. Hexadental ligands also having the number of lone pair of electron is the 6. 6 lone pair of electron means there are 6 donor atom also coordinated to the one central metal atom, or both donor atom will be differ or same. Here you can see here CH2CO1 minus 1 lone pair of electron, single bond NH, lone pair of electron in H also having CH2CO1 minus and lone pair of electron, single bond CH2CH2, single bond NH, 1 lone pair of electron, single bond CH2CO1 minus 1 lone pair of electron, CH2CO1 minus 1 lone pair of electron. So here you can found there are 4 oxygen is the donor atom and the 2 nitrogen atom is the donor atom. So the total donor atom is the 6. So that hexadental ligand. EDTA is the super example of the hexadental ligand, which is the full form is the ethylene diamine tetraacetate. EDTA का full form ethylene diamine tetraacetate. Thus we can find there are various types of the polydental ligands. There are bidental ligands, tridental ligands, tetradental ligands, pentadental ligands, and the hexadental ligands. We can generalize this types of ligand on the basis of number of lone pair of electron. On the basis of lone pair of electron, when the lone pair of electron means 2 donor atom can attach to a single metal atom is known as bidental ligand. If the 3 is known as tridentate and pentadentate. अब आप इसे हिंदी में समझ लीजिए इसको। जो पॉलीडेंटल लिगेंड्स होते हैं वह मुख्यतः जो होते हैं बाईडेंटल लिगेंड्स, ट्राइडेंटल लिगेंड्स, पेंटाडेंटल लिगेंड्स, पेंटाडेंटल और हेक्साडेंटल लिगेंड्स के रूप में। यानी जब किसी लिगेंड के पास, जब किसी संकुल के पास 2 जोड़ा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, वह किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु को कोऑर्डिनेट करने लगेगा तो वहाँ पर आपका बाईडेंटल लिगेंड्स हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इथाइलिन 1 था और एमीन कितना है, 2 है। तो इसका मतलब एक इथाइलिन के साथ कितने एमीन लगे हैं, 2 एमीन लगे हैं। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और 2 डोनर एटम भी हो गया। तो इसे हम इन का मतलब होता है इथाइलिन डाई एमीन, यानी जहाँ पर एक इथाइलिन होगा तो उसके साथ 2 एमीन होंगे, यानी कि एक इथाइलिन से एक एमीन ज्यादा रहेगा। इतना ध्यान देना है कि एक इथाइलिन से एक एमीन ज्यादा रहेगा। अगर हमारे पास इथाइलिन 1 हो रहा है तो इसका मतलब एमीन 2 होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे CH2 है, यहाँ भी CH2, दैट इज इथाइलिन, बट एमीन कितने होंगे, 2 हो गए। सो दैट इसका नाम क्या होगा, इथाइलिन डाई एमीन। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए यह क्या हो गया, बाईडेंटल लिगेंड्स हो गए। अब यहाँ पर देखिए CO1 माइनस एंड सिंगल बॉन्ड CO1 माइनस। तो सो दैट यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन डोनर एटम है और यह ऑक्सीजन डोनर एटम ऑलरेडी कई डोनर इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, बट अगर वो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनर करके सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट कर रहा है उसकी बात निर्भर करता है। तो लेट अस कंसीडर, यहाँ पे मान लेते हैं कि यह एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया होगा अलग अलग करके, तो इसका मतलब यह बाईडेंटल लिगेंड्स होगा। इसका नाम ऑक्सिलेटो है। मैंने आपको बताया था कि निगेटिव लिगेंड्स जो भी है उनके बाद में ई को हटा करके ओ लगा देते हैं, तो ऑक्सिलेटो हो गया, यहाँ पे OX हो गया। NH2CH2CO1 माइनस ग्लाइसाइनेटो GLY हो गया, ग्लाइसाइनेटो हो गया। तो यहाँ पे 2 डोनर एटम है, एक डोनर एटम यह है, एक डोनर एटम यह है, लेकिन दोनों डोनर एटम क्या है, डिफर है। दोनों डोनर एटम क्या है, डिफर है, लेकिन है तो 2 डोनर एटम, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु को कोऑर्डिनेट करेगा, इसलिए यह क्या होगा, ग्लाइसाइनेटो GLY, यह एक बाईडेंटल लिगेंड्स होगा। ट्राइडेंटल लिगेंड्स में क्या होगा, ट्राइडेंटल लिगेंड्स का मतलब जब 3 डोनर एटम किसी एक केंद्रीय धातु परमाणु को कोऑर्डिनेट कर रहे हो, यानी उनके पास ऑलरेडी 3 जोड़ा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, चाहे डोनर एटम सेम हो चाहे डिफर हो, वहां पे ट्राइडेंटल लिगेंड्स हो जाता है। जैसे NH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड NH2। आप यहाँ पर देख सकते हैं NH2 यहाँ पे 3 एमीन ग्रुप है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मैंने आपसे बताया था कि अगर एक इथाइलिन होगा तो एक से ज्यादा एमीन होगा। तो यहाँ पर कितने इथाइलिन है, यहाँ पे आपके पास 3
यहाँ पे आपके पास 2 इथाइलिन है, तो एमीन कितना हो जाएगा, 3 एमीन हो जाएगा। देखिए आप 2 इथाइलिन यहाँ पे मौजूद है, तो 2 के लिए मैंने क्या लगाया, डाई लगाया, तो डाई इथाइलिन हो गया। एमीन आपके पास कितने होंगे, 3 होंगे, इसलिए मैंने क्या लगाया, ट्राई लगाया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइलिन ट्राई एमीन। और इसे सब फॉर्म में क्या लिखेंगे, डाईइन। क्या लिखेंगे, डाईइन। डाईइन का मतलब क्या होगा, डाई इथाइलिन ट्राई एमीन होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे पाया कि एक लोन पेयर, फिर एक लोन पेयर, फिर एक लोन, टोटल इसमें 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्राई डेंटल लिगेंड्स हो जाएगा। अगला है टेट्रा डेंटल लिगेंड्स। टेट्रा डेंटल लिगेंड्स में देखिए यहाँ पर इथाइलिन है, फिर यहाँ इथाइलिन, यहाँ पे इथाइलिन है, तो कितने इथाइलिन है, 3 इथाइलिन है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, ट्राई इथाइलिन। क्या होगा, ट्राई इथाइलिन। और ट्राई का मतलब एक उससे एक्स्ट्रा, एक उससे ज़्यादा क्या होना चाहिए, एमीन होना चाहिए, तो ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमीन, जिसे हम क्या कहेंगे, ट्राईइन। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह क्या होगा, ट्राईइन हो जाएगा, ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन या टेट्रा डेंटल लिगेंड्स होगा। NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर 5 है आपके पास, क्या है, 5 है। और इथाइलिन कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि इथाइलिन से एक ज़्यादा क्या होगा, एमीन होगा, तो ये क्या होगा, टेट्रा इथाइलिन पेंटा एमीन। टेट्रा इथाइलिन पेंटा। Here there are 5 lone pair of electron because NH2 is the 1 lone pair of electron 1, and second is 1 NH, second NH is the 1 lone pair of electron, so that 1 2 3 4 5. So there are 5 lone pair of electron also having, so that this is known as tetra ethylene 1 2 3 4 tetra ethylene pentaamine, so that we can find pentadental ligands। क्या कहते हैं आप इसमें देख सकते हैं कि 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक एमीन ये है, एक एमीन ये, इसके नीचे जो लिखा हुआ पॉइंट है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक एमीनिया है, एक एमीनिया है, एक एमीनिया है, और फिर यह, तो 1 2 यानी 1 2 3 4 और 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और 4 इसके पास इथाइलिन है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, टेट्रा इथाइलिन पेंटामीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो पॉलीडेंटल लिगेंड्स का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, वह है EDTA, जो हर साल एग्जाम में आपको पूछता रहता है। इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो। एग्जामिनर भी अक्सर प्रैक्टिकल के वाइवा में इसका फुल फॉर्म आपसे पूछते भी रहते हैं कि EDTA का पूरा नाम क्या होता है, और साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहते हैं। तो सबसे पहले आप EDTA का पूरा नाम जानिए, इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो। तो इथाइलिन कितने हैं यहाँ पर, एक बार लिखा हुआ, तो ये आपका क्या है, इथाइलिन है, और ये आपका क्या कर रहे हैं, डाई एमीन, तो एक एमीन यहाँ पर है और एक एमीन यहाँ पर है, तो ये क्या होगा, इथाइलिन हो गया, और पूरा मिला करके 2 एमीन और आगे तो क्या हो गया, इथाइलिन डाई एमीन हो गया। A1 2 3 4 यानी 4 बार एसीटेट है, लेकिन लिगेंड में एसीटेटो बोला जाता है, इसलिए 4 बार है, तो टेट्रा एसीटेटो। तो पूरा नाम क्या आ गया, इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 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 और 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग द सेम डोनर एटम। उनका जो डोनर एटम है वह सेम है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, और साथ ही साथ 2 एमीन ग्रुप है जो कि ऑक्सीजन से डिफर है, तो 4 और 2 क्या हो गए, 6। तो 6 डोनर एटम, 6 डोनर एटम और 6 डोनर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, इसलिए किस टाइप का लिगेंड्स हो जाएगा, हेक्साडेंटल लिगेंड्स हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ऑलरेडी कोई भी लिगेंड्स होगा उसको अगर हम क्लासिफाइड कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं, तो वर्गीकरण करते समय हम उसको वर्गीकरण करते समय यह देखते हैं कि उसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उसके पास चाहे 2 डोनर एटम होगा, चाहे 3 होगा, चाहे उसके सारे डोनर एटम सेम होंगे, चाहे डिफर होंगे, लेकिन उनके नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही हम उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर वह परमाणु एक लोन
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंटेन किया हुआ है तो उसे हम मोनोडेंटेट कहेंगे। अगर वह 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट किया हुआ है, उसके दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु को कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे तो वह ऑलरेडी बाइडेंटेड लिगेंड्स हो जाएंगे। अगर वो 3 से कर रहे हैं तो ट्राइडेंटेड हो जाएंगे, 4 से कर रहे हैं तो टेट्राडेंटेड, 5 से करेंगे तो पेंटाडेंटेड, 6 से करेंगे तो हेक्साडेंटेड लिगेंड्स होंगे।